Okay, hello, assalamu alaikum. Welcome to another live stream for our WordPress series. So last class के अंदर हम footer design कर रहे थे अपनी website का. So let's continue to the live stream from there. If you guys are new to the stream, the link to the WhatsApp community is given in the chat box. Just click on it और ज्वाइन इन कर लो हमारी लाइव वर्डप्रेस प्राइवेट कम्युनिटी को. वहाँ पे और भी बहुत सारे पर्सन्स हैं फ्रॉम वेरियस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान as well as from other countries as well, like India, Uganda, and you guys can enjoy the community and connect with new people there. So I'm putting the link in the chat box. Just click over it and see you join in there. Right. So that's this given. I hope the voice and everything is good. All okay. Let me verify. Yep, everything is going all perfect here. All great. That's great. So let's dive into my screen and see where we left last in the last live session. Yesterday I could not do it due to some health issues, but now I'm here. Alright, so this was the footer that we were designing. We designed the first part of it and second part left. So we will go to first of all, let me share it with our WhatsApp community, because these guys are special for us more, because they wait for our live sessions and come to the live sessions and join us and appreciate me and everyone in the community, help me learn more and do great things. So so if you guys have any questions, you guys can ask in the comment section, and if not, then there is a link given to our WhatsApp community. Click over there and just ask your question in the WhatsApp community. I'm listening to all the comments on the live session as well as over the WhatsApp community as well. You can ask any questions you have about the WordPress, about the design thing and stuff, and I will be happy to answer all of your queries, inshallah. Yep. Do you have any questions, by the way? We're almost about to end the series. See? Perfect. Okay, so we go over here, and in the appearance tab they will see Elementor head and footer, the plugin we did in the last live. You can see the last part of this live series. So I will click over to footer 1 area that we created. Just click over it. Okay, it's loading. I will open with Elementor. If Elementor asks for the non-sensitive diagnostic data, never allow it. Keep it to no thanks, always. Okay, so everything is all perfect. I'm looking for the queries as well. If you guys have any query, and if you're new to the stream, just let me know where you're from and what do you do. Let me know your thoughts. साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ बातें करते हैं, बहुत मज़ा आएगा. I will be happy to learn from you guys new things every day. So as you can see, this is just the footer area. So I'm just clicking over it and go to style, and if I click on this color, I will select global colors. Okay, so if I click on plus, oh no, there should be some color. Nope. If I click over, yep, you have to select it over from here. Click on the custom global. Assalamu alaikum, Juma Mubarak, walaikum assalam, khair Mubarak bro. So secondary color I was set to this one, so it will automatically become black. I don't need to copy the color again and again and all the kind of stuff. Okay, so that is how it will work. Now there is some socials thing. You can do it two way. Rather, you can create an icon list. And by the way, this is a paid theme and it has a spelling mistake. Twitter, not Twitter. Okay, so you can do it two ways.
What I can do is I can put an icon list here, drag it down here, and in the icons tab just remove the icons from here and type in the name of the platform. Let's make it LinkedIn. Open it up, remove the icon tab, and I make it to Facebook, kind of this. I take this one and remove the icon from here and make it to Instagram. Make sense? Twitter key, now the Twitter is X now, so I will make it to X. Sounds good. So set it to inline as this builder did, like this one. Make sense now? Looks good. So that's how you do it. And space between, just increase the space as you want it to be. So keeping the design a bit broader between space, so everybody could see the difference in between. If I put a divider in between and I put the width to like this, so you can clearly see there is a short border in between there, kind of this. If you want to keep this border, that's fine. If you don't want to, it looks silly, just ignore it. So I'm ignoring it right now and I'm making it off. I don't need it right now. So I don't have any icon, so I don't need to set anything. Go over to text and text, click here. So this is the text thing, not a secondary format or primary format, right? So by default the font that we set is Jost is auto applied here automatically. I don't need to do it again and again over again. Make sense? So that's how this works, and this looks beautiful, by the way. So what I will do is I will do it uppercase. That's it. Yeah. What did divider? Sorry. Divider. Where? Right. So if you want to, so go over to list and open the divider in here. Select the text color. So I will make it to secondary color and set the weightage to maybe 1. Looks better. Yeah, that's totally your choice as you want it to be. Make sense? So if the stream sounds not easy to understand in English, let me know. उर्दू में बात कर लेते हैं. उर्दू नहीं समझ आती तो पंजाबी का मिक्सर भी पा के गल कर लेंगे. तुसी दसना मैनू. ठीक है. So yep. So actually we have Alex Best from Uganda, and he doesn't understand actually Urdu. So I think the audience also understands the English as well. So that is why I'm keeping it a mixture of both the languages. So yep, the alignment is set to left. What I will do is I will select this one and go over to the padding and make it to 0 padding, the whole column thing, and I will select this single element as well and go over to padding and make it to 0 paddings. That's it. So there should, even if there is some space that then it should be covered, right? So now looks good. Our design is ready to go. Our workload is lessened a lot than before, but the social icons size is greater than the description. So what I will do is I will select this one, come over here, go to text setting, go to typography, and now you can set the size as well. So there is no global setting for sizing stuff right now. So what I will do is I will make it to 18, maybe 16, 17, maybe, depending on your choice. So what I will do is I will come over here and set it to 18, not 8, 18, or maybe 20. We have to do our things, not just copy paste what the competitors are doing. We have to make it a more better version of it, so the user also can understand and see the content more easily. So I will go over to text and make it to 18, because this looks actually better to make the user click on your icons. Although, but I will see the above sizing as well, what I have put, what I have been using. No, so I will have to make it to 18 as well here. So 18 sounds perfect, and average sizing. So 18 here works perfect.
sorry, 20, it's 20, so I will make it to 18. And same like this for these socials, I will make it to 18. Kind of, yep, it's already 18. If you want to reduce it to, so you can set it to 17, not 16, because it will be much shorter then. Make sense? Yeah, yeah, this looks better. And जी अक्सर भाई आप बताएं कैसा लग रहा है, it should be improved or what should be the case here? Let me know in the comment section. So I will come here to and select the heading over here. So heading is auto applied, and the primary color is set to blue, so that is why it is. So I will set the secondary color to black as our charcoal black color, right, to the headings. And I will go to the typography, and by default the primary font is set to Oswald, exactly the thing, it's already applied in here. So I will select it and make it to 20 or maybe 24 heading. So I will set the text to menu. Just you can see the thing how much our workload is reduced after just setting a global setting in Elementor. You can see the difference. And one thing I want to share here is if I told you all those things before in the start, although it's a learning for me, but as well as a new learning that I got, if I give you all the easy things in start, you will never know the pain and you will take it for granted. That is a very basic thing every beginner could do, and blah blah blah. So there's a very beautiful story about it as well that I learned in my childhood, early childhood. There was so I will change the numbers a bit because पहले वक्तों में 1000 2000 का फिगर बहुत बड़ा फिगर होता था. अब तो बहुत बेसिक हो गया, राइट. So I will select menu like this. Alright, so what happened is was a guy जिसने एक दफ़ा मशीन लगाई, कपड़ों की मशीन लगाई, और उसकी कपड़ों की मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आ गया. आई एम गिविंग द कंटेक्स्ट इन उर्दू. वाज दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर पाकिस्तानीज टू अंडरस्टैंड. So there was a person who put a loom, put a machine कपड़े बनाने वाली, और उसके अंदर उसने क्या किया कि उसकी मशीन चलते चलते उसमें कोई फॉल्ट आ गया, और उस फॉल्ट का नुकसान कुछ यूँ हुआ नुकसान उसका कुछ इस तरह से उसको रिजल्ट इन हुआ कि उसको कोई मकैनिक नहीं मिल रहा था ठीक करने वाला. जो आता वो अपने हाथ कंडा लड़ाता, उससे ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है. और एवरीबडी वाज आस्किंग फॉर अ वेरी रीज़नेबल प्राइस. बट देन अ पर्सन केम देयर, और उसने आके सिर्फ उस एक पॉइंट के ऊपर हथौड़ा मारा, और उसका उसने जस्ट इन केस ही चार्ज लाइक 1 लाख फॉर इट, जस्ट एक थोड़ा मारने के लिए. तो द ऑनर सेड के 1 लाख एक थोड़ा ही तो मारा है, इसका इस चीज़ का क्या 1 लाख से तलब. तो ये सेड कि हथौड़ा मारने की वर्थ नहीं है, किस जगह पे मारना है और कैसे मारना है, कितने फोर्स से मारना है, ठीक है. ये मेरा नॉलेज है, इसकी वर्थ है 1 लाख रुपया. वैसे काम वो इतना सही है. इसी तरीके से द गाइज हु आर लर्निंग दिस वेब सीरीज विल बी गोइंग टू द मार्केट. यू गाइज विल बी सेलिंग द सेम सर्विस फॉर $100, एंड देयर विल बी सो मेनी गाइज हु विल बी सेलिंग द सेम सर्विस फॉर $1000, depending on how much you confident about your product. Make sense? Right? So what I will do is I will select and copy the same list from here without doing the double minute stuff. I will paste it over here and make it to default size. It will become like this. Go to style, close the divider in here, space between, lessen it out, lessen it a bit. There is a dot with every icon. So what I will do is I will open it up and search for dot circle, just in case, like this. I need to find that dot exactly what color it should be. So just in case I select this one, I close everybody and set now the links here: home, about, blog,
contact page. Oh, so not contact page, simply contact, kind of this. And what you will do is you will paste the every link here. I will tell you everything how to do the internal linking stuff in your website for your web design. I will do a lecture about it because this is something very basic things people ignore. So I will come over to and set the color, secondary color to black, kind of this. I will make the icon size to small as much I could do. There should not there is no kind of thing that I need to add some spacing to it or kind of so there is a sizing of 10 and 10 to 15. Make it horizontal alignment to left, vertical alignment to center. जितना गिवन बॉक्स है उसके अंदर सेंटर लाइन हो जाए. Like this is the box and this is the element. It should be above, it should be down, or it should be in between. So you set the vertical alignments like this. Okay, and you can do it manually as well if you want to. So text alignment. So text, I will select the global and set to the text font that is by default JOST applied here. 17 is being applied. I will make it to 18 in here like this, and it's not in uppercase. So what I will do is I will transform it to by default like this. Make sense? So that's how you do it. And there should not be text shadow kind of thing because it makes it more hilarious. And the simple color is black. Whenever go somewhere hover over it, so the primary color, it becomes to the primary color. Same like this for the icon. If somebody come over here, so the secondary color become blue, as we were doing above. सही है. तो इस तरह से करके हमारा ये बन जाएगा. तो यहाँ से कंटेंट में जाके मुझे ये आइकन कलर का थोड़ा सा है. आइकन सर्कल 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 सर्कल, ये सर्कल. इफ आई सर्च फॉर सर्कल, circle filled solid. So like kind of this thing, I will select this circle over here. So it's called circle. So I will come here again and set it to circle. Yeah, I will copy. Control Z, Control C this. I will select the circle over here. It will set to this. Now I will again set it to for individually for everyone here. Search for circle and set to this. Again contact, open it one, search to circle, and there you go. Once you are done, go to style, go to icon and set the size to as much low you could do you want to. Make sense? So there is no option for kind of radius thing, so I could do it all manually as well as per my needs. That's how you do it. Your contact is ready. Make sense? So the menu section is fully prepared here. All done. One thing you can notice is there is a more space between menu and home in here than here. Right? So yep, I have to add a padding over here. So I will select this one, set that 10 padding by default. If you can see that the menu section over here is fully aligned to straight with these. So right, left say I will make it to 0 to keep the alignment. Yeah. And from the top 10 padding is all enough, nothing more needed. If you want to lessen it down, so put a padding of like 2 or 20 maybe. 20 from the top sounds good. And there is also thing it has put a very little padding over on the top thing, but I want a more spacer because this doesn't seem to be more attractive to me. So what I will do is from the top I will make it to 100 padding, kind of this.
This looks fine because the space between in here and this space should kind of match with each other. So I will make it to maybe 130 for it. 120. Yep. 120. No, 110. That will work perfectly fine for me. That's how you do it. And the contact info, again copy this thing from here, come over here and paste it. All the settings were being done, nothing to do new here. Set the location icon. So location icon I need to find now. It was very hard to find exact icon for the location. Oh, okay, I need to find it. मुझे लगता है उर्दू में मज़ा नहीं आ रहा लोगों को. वी आर नॉट एंजॉइंग इट मे बी. नो, डायरेक्ट लोकेशन इज इट इज़ डिफरेंट नेम फॉर द लोकेशन. पॉइंटर नहीं, इसका लोकेशन का कुछ और नाम है. मैप 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 कुड भी मैप पे आ गया था. ठीक है, तो यहाँ से जो आप चूज़ करना चाहो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. गुड पॉइंट, थैंक यू. अगर विंडो डॉट करके लगा लें. हाँ, विंडो डॉट क्या वो जो लगाते हैं मोजी, विंडो डॉट करके मोजी लगा लें लोकेशन का. आई डोंट नो. विंडो पहले लगाया था. अच्छा नहीं, वो नहीं लग सकता. नहीं, इमोजीज डजंट वर्क है. ये आप ये वाला कह रहे हो ना. जी. विंडो दबा के डॉट दबा दें और तो ये ऐसे आ जाए. वो लग जाएगा लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा लाइक दिस. सही है, आप कलो करके देख लो. यहाँ पर ये ख़त्म. चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं करने में क्या है. अब ढूंढना पड़ेगा वो वाला. वो कहते हैं क्या है उसको, लोकेशन को. वो देख लें. हिस्सा वो पीछे आया था वो ये वाला. ये जी. नहीं, ये इतना अच्छा नहीं लगता ना. टाइम हो जाए. यही तो बात है, ढूंढना पड़ता है बस. अब आपने खुद छेड़ा है, मैं कुछ कर नहीं सकता. सही है ना, लाइव स्ट्रीम पे यही तो हमें फ़ायदा है, हम अपना खोल के एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशंस. यहाँ पर भी मिलना मुश्किल है. मिले तो बताइएगा, नज़र आए तो. You guys can also tell in the chat as well if you guys are watching this right now. I don't know what happened to my audience. क्यों इतनी डाउन हो गए हो आप लोग. फोन जी मेरे का तो है. यहाँ पे तो फूड मिलेगा ना, ये तो ड्राइविंग आ जाएगी. लेकिन ड्राइविंग में लोकेशन आ सकती है. लोकेशन 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 आपका ख्याल है ना बस. ये वर्ल्ड मैप है, ये अर्थ का लगा सकते हो. ख्याल ही तो अच्छा करना होता है लड़के. गुमान अच्छा करोगे तो चीज़ मिलेगी. गुमान ही बुरा हो गया तो फिर नहीं मिलेगा कुछ. ये डॉट्स आप लगा सकते थे इसकी जगह. चलो इन केस हम यहाँ पे नहीं, अगर इस तरह का हमें ढूंढने से मिल रहा तो हम जहाज़ यूज़ कर सकते हैं फ़्लाइट दिखाने के लिए या वर्ल्ड मैप दिखाने इस तरह से. और यहाँ पे अपना जो भी लोकेशन है, जैसे कि जस्ट इन केस GCCS सिंह पंजाब पाकिस्तान.
या GCC, ओवरटेकिंग पंजाब, पाकिस्तान, जस्ट इन केस। ठीक है, इसी तरह से गो ओवर टू अबाउट सेक्शन, रिमूव द आइकन एयर एंड नाउ वी नीड अ फ़ोन। सो नो, या हम अब दूसरा लगाएंगे, खुद लगाएंगे, हम यहाँ से नहीं लेंगे, अब सारा कुछ यहीं से उठाएंगे। आई विल सर्च फॉर फ़ोन हियर, फ़ोन, आई विल सेलेक्ट टू दिस वन and set the phone to +92 31107154490, like this. And in the link section, what I will do is I will set a command tell colon and set it to the number, so whoever will click on it will open a dialer on their phone. Nice, सही है, तो वो उनके मोबाइल पे खुद ही डायलर खुल जाएगा। तो ये हम एक्सपेरिमेंटल चीज़ कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स फॉर अस टुडे। सो नाउ वी नीड एन ईमेल थिंग। तो यहाँ पर यप, ईमेल के लिए हम यहाँ पर इसको बोलते हैं यार, इसको लिफाफे को क्या बोलते हैं, इनवेलप। तो यहाँ पे इनवेलप, यप, like this. The envelope will come over here and I will select the to email to like digital koji @gmail.com, या फिर admin@usman.local, इस पर कॉन्टेक्ट कर लो, या support@, ये वेब मेल्स आगे जाके आप लोगों को मैं बताऊंगा ये कैसे बनाते हैं। सही है, तो ये लोकल के ऊपर तो नहीं वेब मेल बन सकती, लेकिन एक्टिव डोमेन होस्टिंग के ऊपर बनती है, जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई जब भी इसके ऊपर क्लिक करें ना, आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, लोग आप ईमेल पे क्लिक करते हो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ईमेल मेल खुल जाता है। वो क्यों खुलता है, वो ऐसे खुलता है कि आई विल सेलेक्ट द ईमेल पार्ट हियर एंड आई विल सेट अ ईमेल कमांड टू मेल टू MAILTO मेल टू कॉलन, जो भी आपकी ईमेल है उसको डाल दो। ठीक है, तो जो भी इस पर क्लिक करेगा उसके सामने मेल ऑप्शन खुल जाएगा। मेक सेंस? ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट अ फुटर ऑफ योर ओन। पीछे मेल टू कोलन डायलर आता था। हाँ, मैसेज डायलर वो था, डायलर के लिए था, जैसे कि अब इस पर कोई क्लिक करेगा ना, मैं दिखा देता हूँ, तो आपका डायलर खुल जाएगा जब मोबाइल पे कोई खोलेगा। वो लिखा तो आई विल एग्जिट, हाँ उसको था टेल कॉलन, टेल कॉलन, ठीक है, टेल कॉलन एंड मेल टू। ठीक है, सो आई विल सेट ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू नो थैंक्स and there you go, and I will open the site now, so it will be automatically applied to our whole website thing. हाजरा कुछ कह रही हैं हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी के, मैंने लास्ट 3 डेज से अपना लैपटॉप ऑन तक नहीं किया था, तबीयत ठीक नहीं थी, आज सोचा था कि तबीयत ठीक है ना ठीक ना भी हो लैपटॉप ऑन करूँगी, कुछ थोड़ा बहुत काम ज़रूरी करें, लेकिन नेट नहीं है। सॉरी फॉर योर लॉस। सही है, तो आओ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे फ़न भी होगा, बातें भी होंगी और बड़ा कुछ होगा। ठीक है, तो द लिंक इज़ गिवन इन द कमेंट सेक्शन, क्लिक ओवर इट एंड join our WhatsApp community. So now you can see there's the footer is already prepared. So whenever I click on this, so the Usman.local open the application. तो if I open pick an app application, तो जब आप ये फ़ोन पे कोई क्लिक करेगा तो उसके फ़ोन पे डायलर खोल जाएगा, एंड सेम एज इफ आई क्लिक ऑन द ईमेल थिंग, सो द मेल ऑप्शन विल ओपन अप हियर ऑटोमेटिकली। सही है, दैट्स हाउ यू डू इट, एंड इफ एनीबडी देयर इज़ नो लिंक्स ऑन इट, तो जब भी कोई इन पर क्लिक करेगा तो इनके रिडायरेक्टेड पेजेस पे चला जाएगा। अभी मेरे सोशल्स भी नहीं है, वरना वो सोशल्स पे चला जाएगा। सही है,
दैट्स हाउ यू क्रिएट अ फोटर एरिया फॉर योर वेबसाइट कस्टम, जो कि पूरी वेबसाइट पे ऑटो अप्लाई हो गया और आपकी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन, रैदर देन वो नहीं जो आपके थीम ने आपको प्रोवाइड किया, बिकॉज थीम प्रोवाइड्स अ वेरी लिमिटेड फीचर्स फुटर, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन क्रिएट योर ओन वेरी रिस्पॉन्सिव, मोबाइल टैबलेट के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी का बना सकते हो, हर चीज़ अपने तरीके से कर सकते हो. मेकिंग सेंस टू यू? यस, परफेक्ट. आर वी रेडी टू माइंड अप टुडे? ठीक है, तो अभी कॉन्टैक्ट पेज बनाया ही नहीं है तो इस वजह से ये सारा ऐसे आपको नज़र आ रहा है. चलो जी, डन करते हैं. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, कि क्यों नहीं आप लोगों को स्ट्रीम, या तो इंग्लिश लैंग्वेज का इशू था आज. गिव मी द फीडबैक अबाउट इट सो आई कैन इम्प्रूव, और या फिर यू गाइज आर ओके विद द स्ट्रीम एंड बट नॉट इंगेजिंग दैट मच, तो कुछ तो गैप है. लेट मी नो वेयर इज़ द गैप एंड वी आई विल इंशाल्लाह सॉर्ट इट आउट फॉर यू, और फिर उसके हिसाब से फिर आपसे बातें करेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह. चलें, डन करें. only 5 people joined us on the live stream. I don't know what's happening. चले, कोई बात नहीं, टोटली अंडरस्टूड. सो आई होप मुझे बड़ा मज़ा आया बना के फुटर. मैंने पहली दफ़ा ये प्लगइन यूज़ किया था, एलिमेंटर हेडर फुटर. ऑल दो मैंने एलिमेंटर प्रो के साथ पहले ये काम किया हुआ है, लेकिन फ्री यूज़र्स के अंदर मैंने नहीं किया. तो आज करके बहुत अच्छा लगा. आई होप कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा. जज़ाकल्लाह खैर. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट स्ट्रीम. अल्लाह हाफिज़.